Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your teacher Munazza Khurram, and today I will teach you unit number 10 of your English book, and its title is Health is Wealth. Let's start reading. Usman was a boy who loved to eat. उस्मान एक ऐसा लड़का था जिसको खाने से बहुत दिलचस्पी थी. He ate all the time. वो हर वक्त खाता रहता था. Even while reading, watching TV or playing. पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए और इवन खेलते हुए भी. When he was in 5th grade, his dad got a new job in a different city. जब वो क्लास 5 में था तो उसके फादर को एक नए शहर में एक नई जॉब मिल गई. This meant they had to move to another city. इसका मतलब था कि अब उन्होंने एक और शहर में जाना है. Usman was really sad. उस्मान बहुत नाखुश था because he had to leave all his friends and meet new people. क्योंकि उसे अपने तमाम पुराने दोस्तों को छोड़ना था और नए लोगों से मिलना था. He found a way to deal with this new stress. उसने इस नई परेशानी से बचने के लिए एक नया तरीका इजाद किया. He ate more and it seemed to help. वो खाता रहता था और खाता रहता था. उससे लगता था कि इससे उसकी स्ट्रेस कम हो रही है. His mother tried to stop him from overeating. उसकी मदर ने काफ़ी कोशिश की कि वो उसको ओवर ईटिंग से उसको मना कर सकें. ओवर ईटिंग मीन्स बेटे टू ईट मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जितनी आपकी बॉडी नीड्स नहीं होती उससे ज़्यादा आप खाते हैं. बट ही डिडंट बॉदर एंड गॉट बल्कियर डे बाय डे. लेकिन वो इस बिल्कुल भी नहीं रुकता था खाने से. एंड गॉट बल्कियर का मतलब है और फैट होता गया एंड ह्यूज इन साइज होता गया डे बाय डे, हर रोज. इन द न्यू सिटी ही गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल. नए शहर में उसको एक नए स्कूल में एडमिशन मिल गया. His eating habits grew even worse. उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं और ख़राब हो गई. वर्स इज द सेकेंड डिग्री ऑफ बैड और इसका मतलब होता है और ज़्यादा ख़राब. लाइक बैड तो फर्स्ट डिग्री है ना, तो वर्स का मतलब है और ज़्यादा ख़राब. He ate more and more. His class fellows started taunting him and making fun of him. अब जब वो इतना खा रहा था तो जाहिर है उसके वेट पे असर पड़ना था ना. अब उसके क्लास फेलोज ने उसको टॉन्ट करना शुरू कर दिया. टॉन्ट का मतलब है टू से अनकाइंड वर्ड्स एंड दिस वे द पीपल कैन हर्ट समबडी. और उसका वो मजाक भी उड़ाते थे. दे इवन कॉल्ड हिम हम्प्टी डम्प्टी. वो उसको हम्प्टी डम्प्टी भी कहते थे. आपको पता है हम्प्टी डम्प्टी एक कैरेक्टर है और यू मस्ट हैव सीन इट इन द टीवी. एक बहुत ही बल्कियर सा, एक बहुत ही चबी सा कैरेक्टर है जिसको अक्सर आप दीवार पे बैठा हुआ देखते हैं. और एक छोटी सी पोइम भी है, अगर मैं आपको वो थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं तो. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's men and all the king's horses could not put Humpty Dumpty together again. तो लोग उसको हम्प्टी डम्प्टी कहना स्टार्ट हो गए. They kept on bullying and teasing him. बुलिंग का मतलब है कि टू से अनकाइंड वर्ड्स टू हर्ट समबडी. और वो उसको बुली करते थे और उसको टीज करते थे, तंग करते थे. ही वॉज रियली अपसेट. वो बहुत परेशान हुआ. समटाइम्स ही वुड क्वारल विद देम व्हेन दे कॉल्ड हिम चबी. कभी कभी वो उनके साथ फाइटिंग करता था. क्वाइल मीन्स टू फाइट विद समवन. कभी कभी वो उनके साथ क्वाइल भी करता था व्हेन एवर दे कॉल हिम चबी. चबी मीन्स फैट और फ्लैशी. ये भी अगेन वही है जिसको हम बल्कियर भी कह सकते हैं. After some days, the teacher announced a sports competition in school. कुछ दिन के बाद टीचर ने एक स्पोर्ट्स कंपटीशन का अनाउंस किया. Usman took part in the race. उस्मान ने भी उस रेस में हिस्सा लिया. But because of his weight, he stayed far behind on the track. लेकिन वही बात है कि अपने वेट की वजह से वो बहुत पीछे रह गया. Far behind means left behind. वो ट्रैक पे बहुत पीछे रह गया. He heard a voice from the crowd. उसने क्राउड से एक आवाज सुनी. Hey Humpty Dumpty, you left behind. Humpty Dumpty, तुम तो बहुत पीछे रह गए. Hearing this, Usman felt heartbroken. Heartbroken means disappointed or unhappy or dejected. जब उस्मान ने ये सुना तो उसका तो दिल ही टूट गया. He stumbled and twisted his ankle and fell on the track. Stumble means fell और twisted का मतलब है bend हो गया. क्या bend हो गया उसका? ankle.
उस्मान जो है वो उसका एंकल बेंड हो गया और वो ट्रैक के ऊपर गिर गया। ऑन दैट डे उस्मान डिसाइडेड टू लूज हिज वेट एंड कंट्रोल हिज ईटिंग हैबिट्स। उस दिन उस्मान ने सोचा कि वो अपने वेट को लूज करेगा और अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी कंट्रोल करेगा। आपको पता है ना बेटे कि आप सबकी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि जब हमें किसी काम से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, किसी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे रह रहे हो, तो हम एक वक्त में आके ज़रूर सोचते हैं कि हमें अपना करेज को मस्टर अप करना चाहिए और इस आदत को, ये जो जानलेवा आदत है, हमें इसे जान छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उस्मान ने भी ये सोचा कि वो एक चेंज पर्सन बन के सामने आए और इन सारी बैड हैबिट्स को छोड़ दे। ही रिटर्न्ड होम एंड टोल्ड एवरीथिंग टू हिज मॉम। वो घर वापस आ गया और उसने सब कुछ अपनी मदर को बता दिया। आपको पता है ना कि मदर हमेशा बेस्ट फ्रेंड होती हैं, जिनके साथ आप अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं। हिज मॉम encouraged him। उसकी मदर ने उसको इनकरेज किया। इनकरेज मीन टू गिव होप और करेज और टू सपोर्ट समबडी मेंटली। उसको पॉजिटिव थिंकिंग की आदत डाली। She also advised him to do exercise regularly and eat healthy food like fruits and vegetables। उस उसकी मदर ने उसको ये भी एडवाइस किया कि तुम एक्सरसाइज करो रेगुलरली और हेल्दी फूड खाओ। और हेल्दी फूड में क्या क्या आ जाता है? फ्रूट और वेजिटेबल्स। और इस दौरान उसने क्या क्या छोड़ना था? सारी फ्राइड थिंग्स को और सारे जंक फूड को उसने छोड़ना था, तभी वो एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपना सकता था। उस्मान promised himself to follow his mom's advice। उस्मान ने अपने आप से वादा किया कि वो अपनी मदर की एडवाइस को ज़रूर फॉलो करेगा। और आपको पता है सबसे बेहतरीन वादा जो होता है वो इंसान का अपने साथ होता है, क्योंकि आप अपने कॉन्शियस को आंसरेबल होते हैं अबाउट योर एक्शंस। सून समर वेकेशन स्टार्टेड। जल्द ही समर वेकेशन स्टार्ट हो गई। He would go out for a morning walk daily and do a lot of exercise। तो फिर उसने क्या किया? उसने दो आदतें अपनाई। एक तो वो रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता था और फिर बहुत सारी एक्सरसाइज भी करता था। He ate healthier food and avoided eating too much। वो हेल्दी फूड खाता था और बहुत ज्यादा खाने से परहेज करता था। His parents supported and helped him। उसके पेरेंट्स भी उसके लिए इमोशनली हर वक्त अवेलेबल होते थे और वो उसको बहुत सपोर्ट करते थे, उसको हेल्प करते थे इन लूजिंग वेट। ही मेड द मॉर्निंग वॉक एंड हेल्दी फूड हैबिट्स पार्ट्स ऑफ हिज लाइफ। उसने मॉर्निंग वॉक को और हेल्दी फूड हैबिट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। He had become a smart boy by the end of summer vacation। और वो समर वेकेशन के एंड में दोबारा एक स्मार्ट बॉय, एक चेंज बॉय बन गया। आफ्टर समर वेकेशन when he went back to school everybody was surprised to see him। और समर वेकेशन के बाद जब वो स्कूल गया तो सब उसे देख के बहुत हैरान हुए। He was looking very healthy, tall and smart। अब ये तीन एडजेक्टिव्स उसके लिए यूज किए गए, हेल्दी, टॉल और स्मार्ट। और आपको याद होगा कि पहले उसके लिए लोग क्या कहते थे? हम्टी डम्टी, चबी, बल्कियर, फ्लैशी और पता नहीं किन किन अलकाबात से उसको नवाजते थे। लेकिन जब उसने सोच लिया कि वो अपनी बैड ईटिंग हैबिट्स को छोड़ देगा और अपने आप को एक अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाएगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकी और वो दोबारा एक हेल्दी, टॉल और स्मार्ट बॉय बन के सबके सामने आ गया। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही आया। Okay, बेटे, this is page number 84 and now we'll do the verse meanings। Our first word is taunt। Taunt का meaning है to try to make somebody angry। Next is bullying, and bullying means the use of power to frighten or hurt weaker people। कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं किसी वीक शख्स को हर्ट करने के लिए या उसे खौफजदा करने के लिए। Stumble means to fall। Twist means to bend or turn something। Encourage, to give somebody support, courage or hope। This is again page number 84 and now we will do the word sentences of the same words। ठीक है, जो हम पहले वर्ड्स मीनिंग्स में पढ़ के आए हैं। The first word is taunt and its sentence is the children taunted him for not winning the race। Next is bullying।
Bullying has become a common practice in our schools. We should be avoided. Stumble. While running, he hit a stone and stumbled. Twist. He twisted the wire to fix the machine. Encourage. Children should be encouraged to opt any field of their choice. Now this is page number 85 and now we'll do comprehension, the question answers of this unit. What was Usman's bad habit? Usman's bad habit was overeating. Next question is, what did Usman's class fellows call him? आपको याद आ गया होगा. They called him Humpty Dumpty. How did Usman change his habit? Answer is, Usman changed his habit by exercising regularly and eating healthy food like fruit and vegetables. Next question is, why is eating too much not good for health? Its answer is, eating too much is not good for health because a person becomes obese. Obese means fat. And may catch diseases like diabetes and high blood pressure easily. क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो फिर जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सारी बीमारियां लगनी होती हैं लाइक डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर क्योंकि ये सारी डायरेक्टली रिलेटेड है ओवर ईटिंग से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एक्सरसाइज हेल्प अस टू स्टे हेल्दी? Its answer is, doing exercise regularly makes a person fit as fiddle and he becomes smart, active and healthy. This is page number 88 and the question is, fill in the blanks with the correct options. But all of these options which I have given right beside these sentences are those and this and those and that. They are called the demonstrative pronouns. Now the question is, what are demonstrative pronouns? These pronouns are used to point to the people and things. We use this and that for the singular nouns, and then we use these and those for the plural nouns. Then there is another difference also, that we use this and these for the things which are near to us, and then we use that and those for the things which are not near to us, which are far away from us. Okay, now come to the exercise. You have to keep these things in mind, that all of these pronouns will start with the capital letters. Now the first one is, dash chocolates are for you. Option is those and this. अब आपको पता है कि चॉकलेट्स जो है ये प्लूरल है, तो इसके लिए कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे, दोज या दिस? ऑफ कोर्स दोज. ठीक है, और आपने देखा कि दोज का टी कैपिटल है. नेक्स्ट, डैश इज आवर न्यू टीचर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टीचर. टीचर इज अ सिंगुलर नाउन और हमारे पास ऑप्शंस में एक दोज है और एक दैट है. व्हाट विल वी यूज? दैट. ठीक है, और दैट का टी कैपिटल है. नेक्स्ट इज फ्रूट्स आर माइन. फ्रूट्स आपको पता है, इस नाउन को देखें और पहचानें कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है. दिस इज प्लूरल और हमारे पास देयर आर टू ऑप्शंस लाइक दैट एंड दीज. एंड विच ऑप्शन वी विल यूज हियर? दीज. यस. नेक्स्ट, डैश ऑफिस इज नियर माई हाउस. हमारे पास the thing we are talking about right now is office. Office is a singular noun and we will use this here. This office is near my house. This is page number 89. Question is, rewrite the given sentences using the adverbs of frequency in the right place. Now the question arises, what is adverb? But adverb is a word which explains about verb. For example, if I say he walks slowly, so here slowly is adverb. Now what is adverb of frequency? Adverb of frequency are adverbs of time that tells us how often or frequently something happens. Now where will we put the adverbs of frequency? They will be used right after the subject
which can be anything like noun or pronoun. For example, in this sentence, I do my homework on time. Now the adverb of frequency given to us is always. कहाँ मैं इसको place करूँगी? I will place it right after I. ठीक है? मैं इसको I के फौरन बाद place करूँगी. I always do my homework on time. अच्छे बच्चों की तरह. Okay, next. We go to the park often. नाउ हमारे पास जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है ऑफन वेयर विल आई प्लेस इट आई विल प्लेस इट आफ्टर वी ऑफन गो टू द पार्क नेक्स्ट इज रिमशा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नेवर आई विल प्लेस इट राइट आफ्टर रिमशा नेवर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग बेटे this is the last exercise of this unit, and I hope you must have comprehended all the concepts which we have read before. Please read this lesson at home so that you may understand it well. We will meet again, inshallah, for the next lesson. Until then, thank you and Allah Hafiz.